and welcome back. So this is going to be our second video on haloalkanes and haloarenes. If you have seen the first part, we have already seen how or what are haloalkanes and haloarenes and what is the functional group site of reactivity and what are the types of haloalkanes and haloarenes. In this particular video, we are going to talk on how to remember and write the manufacturing methods or the preparation methods of haloalkanes and haloarenes, which is going to be very easy. First, I'll give you a trick in order to remember, and then we will follow the trick in order to understand the preparation methods. Okay, right. So what exactly is the trick in order to remember things in organic? Okay, it's not like we have to by heart each and everything. Okay, so have a look, sir. First, what I am doing is I am trying in order to write the complete syllabus of our 12th and 11th in our organic chemistry which we are having, just the names of the chapters. देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, sir. So we have alkynes, and then we have alkenes, and then we have alkanes, and I will write alkyl halide on the top. Okay, that is our haloalkanes, and then comes our alcohols, then comes our aldehydes or ketones, and the last one is our carboxylic acids. So what exactly is this, sir, and how is it going to help us? Okay, so have a look, kids. If you have a look here, you will see that alkyne is nothing but C triple bond C. Whenever I'm having two carbons and they are having a triple bond among them, then we will call it as nothing but an alkyne. In the same way, if I see an alkene, that will be C double bond C. Okay, if I see an alkane, then that will be C single bond C. No unsaturation over here. If I see an alcohol, how exactly do we see an alcohol, sir? CC with an OH. Aldehyde and ketone, how exactly do we see an aldehyde? C double bond OH. If it is a ketone, then it is C double bond O, just C double bond O. And carboxylic acid is C double bond OH. Sir, what have you written here? How is this important with the manufacturing methods of our organic compounds? Okay, how is it going to help us? Now, there are two trains which are going to run over here, or two buses which are going to travel from one side to other side. Let us have a closer look. If someone wants to travel from alkynes to alkanes, then what should they do? Okay, they should generally go for hydrogenation, addition of hydrogen, which is otherwise called as nothing but reduction. Which is otherwise called as what, sir? Reduction. Have a closer look. Have a closer look. C triple bond C, C triple bond C. When we are treating it with H2 in the presence of nickel, platinum, palladium, that means if I am doing reduction, then what will happen, sir? Hydrogen will get attached from one side. So what will happen here is you will get C double bond C and one hydrogen will get attached. So from alkyne, when we are doing reduction or hydrogenation, what is happening? Hydrogens are getting attached and we are getting a double bond. That means you traveled from alkyne to alkene. Now, if you do hydrogenation to an alkene, there will be two more hydrogens which will get attached on this, and what we will get is nothing but an alkane.
I hope you people have understood one thing. Sir, just now what we have seen is if we keep on doing reduction, then from alkyne we will keep traveling and we will come down to alkane. Now reduction वाला part यहीं तक काम करता है सर, इसके बाद reduction काम नहीं करता है. तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? इसके बाद हम लोगों को what we have to do is we have to change our bus, we have to change our train. That means now from alcohol if you want to travel further, अगर अल्कोहल से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, then the process which we will do is called as oxidation. The process which we do is oxidation. तो आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर if I am having an alkane and to that alkane if one extra O is getting attached, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, से फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से यहाँ में क्या एक्स्ट्रा हुआ सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस. एंड हम लोगों को पता है सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट oxidation. Addition of oxygen is nothing but your oxidation. So let us see. So this is carbon, so I am having OH from here to here, from your alkane to alcohol. What we did is simple oxidation. Again, from alcohol to aldehyde or from alcohol to alkene if you want to go, again you have to go for oxidation, which is otherwise dehydrogenation. तो आप लोगों को सबको पता होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज नथिंग बट ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ टेल मी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन. ओके, सो हाउ डज दैट हैपन सर? तो देखिए मैंने अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू से फॉर एग्जांपल देयर इज H and H on both the sides. That means this is a primary alcohol. If you have seen my previous video you will understand this, that this is a primary alcohol. Now to a primary alcohol if I'm doing oxidation तो मैंने क्या किया सर? एक nascent oxygen के साथ treat किया. What is a nascent oxygen? The nascent oxygen is a highly reactive atomic oxygen which is otherwise I normally call it as बच्चा oxygen or I call it as nothing but just born oxygen. ये just born oxygen काफी ज्यादा reactive होता है, काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है. तो ये क्या करता है सर? ये आप लोगों का यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके चला जाता है in order to form water. Due to the removal of hydrogen and hydrogen from both these places, now what will happen is there will be an unsaturation coming up between carbon and oxygen. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन जैसे के वैसे ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए. Now there will be a double bond O. That means from alcohol if I did oxidation which is otherwise called as dehydrogenation, तो मैंने कहाँ पहुंच गया सर? एल्डिहाइड पे. तो आप लोग बोलेंगे सर एल्डिहाइड कीटोन आपने दोनों को एक ही जगह रख दिया. हाँ, मैंने जानबूझ के रखा है. If you are taking primary alcohol then you will get an aldehyde. If you are taking a secondary alcohol, let us see an example. Sir, CHHH and then I am having CH. Here I am having OH, say for example, and here I am having CHHH again. Now the nascent oxygen which will come, it will take away one hydrogen from C. जहां पे अल्कोहल रहेगा वही तो ऑक्सीडाइज होगा. सो एक हाइड्रोजन ले जाएगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से. तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? गौर से देखिए आप लोग. CHHH is as it is. Now the second carbon as it is losing two hydrogens from here will get a double bond O, will get a double bond O, and then I'll have CHH and H. So this is nothing but your ketone. Okay, so if we are taking secondary alcohol then we are going to get a ketone, and if we are taking a primary alcohol then we are getting an aldehyde. तो सर यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन इज द नेक्स्ट मेथड which
we have to do in order to travel from alcohols to aldehydes. In the same way, sir, aldehyde या कीटोन है, इसे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, then what should be done? Again, oxidation has to be done. Again, if you are oxidizing this, okay, if you are oxidizing an aldehyde, what will happen, sir? CHHH अगर है यहाँ पे, this will further get oxidized. You will get C double bond O, जो जैसे का वैसा है. The H will get an extra oxygen in order to become OH. So this is addition of oxygen, due to which we are saying it as nothing but oxidation. I hope you people understand this. I hope you people understand this particular sequence. Now, in this particular sequence, one important thing which you people have to remember and understand is this. ये क्वेश्चन तो तुम लोगों के दिमाग में अभी चल रहा होगा, आप लोगों के सबके दिमाग में जो ये वीडियो देख रहे हैं, सर आपने ये बता दिया, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, आप वो बताइए। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ आने वाला है। गौर से देखिए आप लोग। से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिमेंबर all the preparation methods of alcohols. ओके, जनरली हम लोग एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में हमें लगता है जैसे हमें याद रखना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, बट इसमें क्या होने वाला है आप लोग देखिए। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर एल्कोहल्स। अब ना मुझे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए ना आए, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एबीसीडी पता है नहीं आए, मुझे अगर ये सीक्वेंस पता है तो देखिए सर, आप लोगों को क्या क्या पता चल जाएगा, राइट सर। मैं अगर एक एल्केन को लेता हूँ और ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। सर, मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन को लेके अगर रिडक्शन करता हूँ तब भी मुझे अल्कोहल मिलेगा। सर, मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को लेता हूँ और रिडक्शन करता हूँ तब भी मुझे अल्कोहल मिलेगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर आप ये रिडक्शन के बारे में क्या बता रहे हैं, हम लोग तो इसके बारे में नहीं सुने अभी। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, रिटर्न जर्नी जो है, मतलब हम लोग अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक जो रिटर्न ट्रैवल है, उसके लिए जो ट्रेन लेंगे उसका नाम क्या है सर? रिडक्शन। दैट मीन्स, देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, है ना। अब हम लोग रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स जाते वक्त, ठीक है, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, a primary alcohol can be oxidized into aldehyde. Aldehyde can be directly oxidized into carboxylic acid without any change in the number of carbon atoms. That means यहाँ दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर टेकिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल और अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देन इट विल ब्रिंग डाउन टू योर कीटोन। बट कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, विग्रस करना पड़ेगा, कीटोन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देता नहीं है। अगर विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो बॉन्ड इधर नहीं तो इधर ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, बट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच आर फॉर्मिंग विल बी स्मॉलर देन दिस वन। दैट मींस इससे कम कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे, कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सर ये रिटर्न जर्नी कैसे होता है, हम लोग वापस कैसे आते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं एल्डिहाइड में कैसे पहुंचता हूं रिडक्शन करने से, और फिर मैं हमारा जो एल्डिहाइड है उससे अल्कोहल पे कैसे पहुंचूंगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ रिडक्शन मीन्स नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे सर? जहां अनसिचुरेशन है हम लोग वहां पे ऐड करेंगे। वेरेवर वी आर हैविंग अनसिचुरेशन, exactly on that spot when we do hydrogenation, the hydrogens are going to get added. Okay, so just let us have a look. तो अगर मैं इसको हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं, CHHH will be as it is, C डबल बॉन्ड O के जगह पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और आपके कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। नाउ इफ यू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, आप लोग देखेंगे कि सर ये एक जेम डाइऑल है। आप लोग अगर गौर से याद है आप लोगों को, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट जेम डाई हेलाइड, जहां पे दो हेलोजेंस रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जेम डाई हेलाइड, और यहाँ पे दो अल्कोहल्स हैं जो कि सेम कार्बन पे अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं जेम डाइऑल। तो ये जो जेम डाइऑल होता है यहाँ पे क्या होता है, गौर से देखिए सर, two alcohol groups on the same carbon, okay, are highly unstable। तो ये ब्रेक होके क्या होता है, वाटर बन जाता है। जब ये वाटर बन जाता है, ओके, ये दोनों ब्रेक होके क्या बना देते हैं सर, वाटर बन जाता है। ये जो वाटर बनता है सर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -H2O। ये वाटर जो बनता है सर,
अब जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, देखो तो CHHH जैसे का वैसे, OH माइनस बना, OH माइनस बन के जाएगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, H प्लस चला गया तो कार्बन के ऊपर आ गया माइनस। नाउ दिस माइनस विल जंप इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और जो नीचे हाइड्रोजन है वो एज इट इज है। दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफ आई एम डूइंग रिडक्शन, आई एम कमिंग डाउन टू एन एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को लेके फर्दर रिडक्शन कीजिए, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या आप लोगों से ये बना कि नहीं बना, राइट। एल्डिहाइड को लेके अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मेरा क्या होगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और डबल बॉन्ड हट गया। तो आप लोग बताएंगे मुझे कि एल्डिहाइड को रिडक्शन करने से मेरा अल्कोहल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से कीटोन को रिडक्शन करने से भी अल्कोहल आता है। आ रहा है समझ में? सो आप लोग एल्डिहाइड को भी हाइड्रोजनेशन कीजिए और देखिए अल्कोहल आ रहा है कि नहीं, कीटोन को भी हाइड्रोजनेशन कीजिए और देखिए अल्कोहल आ रहा है कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि एल्डिहाइड को जब मैं रिडक्शन करता हूं तो कौन सा अल्कोहल बनता है, क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी कार्बन के बारे में। सो दैट इज व्हाई आई वांट यू पीपल टू आंसर दैट। द क्वेश्चन इज दिस, aldehydes on reduction produces what alcohol, primary, secondary, tertiary? Ketone on reduction produces what alcohol, primary, secondary, tertiary? I want you people to answer this. Okay, so now I think you people have understood how exactly in order to use this particular सीरीज, दैट इफ आई एम वांट टू प्रिपेयर अल्कोहल्स, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है सर, मुझे ये याद रखना है अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन सर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ ऑल ऑफ दिस विल गिव मी नथिंग बट अल्कोहल्स, राइट। तो आप लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे सर एक बात बताइए, आपने इस एल्काइल हैलाइड को ऊपर में रखा और इसके बारे में आप कुछ बात नहीं कर रहे। यस, बिकॉज इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में एल्काइल हैलाइड नहीं आता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हम लोग हैलोजन नहीं ला सकते हैं। सो दैट इज व्हाई मैंने एल्काइल हैलाइड को ऊपर रखा। तो अगर आप लोग एल्केन से एल्काइल हैलाइड जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, फ्री रेडिकल, ओके, हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल क्या कर सकते हैं, हैलोजिनेशन। अगर आप लोगों को याद है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं सर आप बताइए एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्काइल हैलाइड को ले जाके आप लोग अगर एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं देन आप लोग सीधा सीधा अल्कोहल्स में लैंड करेंगे। ओके, देयर आर मेनी मोर थिंग्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग, बट मैं पहले चाहता हूं कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिले कि जब भी कोई बोलता है किसी का प्रिपरेशन मेथड के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कैसे बात करने वाला हूं। फॉर नाउ, क्योंकि हम लोग एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये पूरा का पूरा लेक्चर जो दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, मैं जब भी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात करूंगा तो मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूंगा हमेशा। आप लोगों को सबसे पहले एल्काइन से बताऊंगा, फिर एल्कीन से बताऊंगा, फिर एल्केन से, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका देख रहे हैं, अगर अल्कोहल का देख रहे हैं, फिर से आपको एल्काइन से बताऊंगा, एल्कीन से बताऊंगा, एल्केन से बताऊंगा, एल्काइल हैलाइड से, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन देख रहे हैं तो मैं सेम सीक्वेंस फॉलो करूंगा, ताकि एक सीक्वेंस में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को याद रखना काफी आसान हो जाता है।